Everyone, welcome back to another interesting session of Ankita's tutorial. Today we will discuss about basic SQL. So before starting the video, as usual, please do like, share and subscribe my channel. Please subscribe my channel because it is very important for me. And do not forget to give comments in the comment section, those who are following my video, so that I will clear your doubt and I will upload more videos regarding your doubt in my upcoming sessions. So now let's get started. So today we will discuss about SQL. As the name suggests, SQL is structured query language. So what is a language? Language means nothing but which we are using for communication. Now what kind of language I am using for communication? I am using both Hindi and English to communicating with you, because I am thinking that it is easy for me to communicate with you, means you the audience, with Hindi and English. So how the user interact with the database in the same way. अगर user को database के साथ interaction करना है तो obviously user also needs a language to communicate with the database. So what is this language? See, this is a, you can see two interface. This is user and this is the database, you can say. So how user will interact with this database? By using certain language, you can say. That language is known as your structured query language. But why this is structured? Structured means which has a fixed data model. Now what is the data model? Or you can say which is a fixed data format. Means we store our data by using the table, और टेबुलर फॉर्म में हम स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करते हैं. वी कॉल दैट टेबल एज अ रिलेशन. इफ यू विल go back to my previous video, then you can follow those video. Now what is the concept of RDBMS, what is a table, what is the combination of table, I have already mentioned in my previous video. So if you want to get back those videos, then please follow my videos. So user कैसे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज दैट लैंग्वेज? दैट इज द SQL, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड व्हिच इज अ फिक्स्ड डेटा मॉडल. दैट इज टेबुलर फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर करते हैं और उस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. दिस इज कमिंग अंडर द कंसेप्ट ऑफ RDBMS. ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड द वीडियोस अबाउट रिगार्डिंग RDBMS. सो if we will go for the, now this is, you can say, the history of SQL. And if I will go for the exact definition, now what is the definition? It is a standard language for accessing and manipulating the database. Means हम लोग कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं by using SQL, and कैसे हम after storing the database, how we will fetch the data from the database. That is also more important. So this is the definition. All RDBMS like MySQL, MS Access, Informix, Oracle, SQL Server uses SQL as their standard database language, that is in the form of query. जो भी ये सब प्लेटफॉर्म, जो भी सब यूज करते हैं ये सब डेटाबेस को, that is वो सब क्वेरी के फॉर्मेट में ही, that is in the form of a query. जो भी हमें क्या करना होता है SQL में, हम लोग as the name suggests structured query language, तो हमें क्वेरी लिखना होता है. So the concept of SQL, little bit history I have provided here. The concept of SQL first started in 1970 by E.F. Cole as relational model, and at the very beginning SQL was known as SQL. SQL means simple English query language. Okay, so means if you will actually observe SQL, whatever the classes, keywords, letters, functions we use in SQL, basically those are the English words like see, select, from, where. These are the clauses: join, natural, star, group, having, order, etc. These are the simple English term, you can say. So but nowadays 90% data are unstructured, only 10% data are structured in the art. So in order to modifying the unstructured data to structured, we use some advanced concept like NoSQL, Big Data, DB. These are the advanced concept, you can say. These are nowadays have been introduced for the unstructured data. But these are the advanced concept. But in for the very beginning, you have to use basic SQL. Okay. Discuss about some common features of SQL.
first feature is SQL is domain specific. Means, see, we want to use that in a particular domain, or we can use that in a particular domain, means in a particular field. Means the data that we will store in the tabular format, means only in case of relational database. और एक होता है आपका जनरल स्पेसिफिक. जनरल मीन्स क्या होता है, जो C++ लैंग्वेज, यू कैन यूज दैट लैंग्वेज इन एवरी वे. उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, या फिर उनका पर्टिकुलर एक डोमेन फिक्स नहीं होता कि ये एग्जैक्टली इस डोमेन में हमको यूज करना है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट फॉर SQL it is particularly domain specific. That is, whenever we want to store our data in a tabular format. Next is one is your SQL is declarative language. What is declarative? Now again, language is of two types. One is your declarative language and another one is your procedural language. Now what is your declarative? Means what to do but not how to do. But in procedural language, you both will be done. Means what to do as well as how to do. Means whenever we are writing a query in SQL, we just need not to write what to be done. We don't have to worry regarding the flow of the query. It is internally handled by the DBMS. How? I will explain it by an example. See, suppose I want to, let me write a query that write a query to find the names of the students who are living in Delhi. What will I do? Simply, I will write the query, select star, that is for all the students we are using star clause. Select star function from, what is the address? Delhi. Select the name of the students who are living in Delhi. Means आप स्टार सेलेक्ट किए फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. किस टेबल से आपको सिलेक्ट करना है? स्टूडेंट टेबल. क्या कंडीशन है आपका? वेयर एड्रेस स्पेसिफाइड. एड्रेस आपको पूछा क्या गया है? एड्रेस इक्वल टू दिल्ली. मैं आपको ये इन डिटेल बताऊंगी क्वेरी कैसे लिखते हैं. फिलहाल मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली. ये जस्ट क्वेरी आपने लिख दिया. वो क्या करेगा? अभी आपका क्वेरी जो लिख दिया, डीबीएमएस क्या करेगा? जो स्टूडेंट्स डेटाबेस में जाके जो स्टूडेंट्स दिल्ली में रहते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के नाम को वो, जिसका एड्रेस दिल्ली है, सारे स्टूडेंट्स के नाम को वो आइडेंटिफाई करेगा. ओके, सो दैट इज इंटरनली हैंडल्ड बाय द डीबीएमएस. बट इन द प्रोसीजरल लैंग्वेज लाइक C++, क्या होता है कि हम लोग, सपोज आई वांट टू राइट ए प्रोग्राम टू स्पेसिफाई द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर. जब आपको फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर निकालना पड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग? पहले व्हाट टू डू फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप, हम जो भी यूज करते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर निकालने के लिए. सो दैट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज. उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है. पर यहाँ पे भी SQL पे भी आपका अभी एडवांस वर्जन आ गया है, जो कि PL/SQL, दैट इज प्रोसीजरल SQL. यहाँ पे आपका बोथ, दैट इज एडवांस वर्जन यू कैन से, यहाँ पे आपका बोथ डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल यूज होता है. बट बेसिक SQL इज ओनली डोमेन स्पेसिफिक.